is the Top Gun equivalent of India. So the best of the best go to the TAC-D. And Sukhoi 30 and Mirage 2000, they all the time exercise together. And this is not the first time this is happening. Crashes during training is something which we have seen earlier. And again, I come back to the little book I was telling you about, which was our Bible, so to say. This is one of the nicks and one of the professional dangers that a fighter pilot goes through. Fighter pilot goes through many dangers during training, technical malfunction, while flying low-level bird hit, and coming into land, you could have bad visibility or enemy fire. So every element out there is out to get you, and some of them make it, some of them don't. Some of the aeroplanes make it, and some of them don't. In this case, we really don't know as yet whether the we are waiting for more details. Yes, and we'll just tell her. I hope that they are fine, because that is what is most important. So these 3 or 4 pilots, I hope they are fine. More information will come in. But once again, I reiterate that during training, it is possible that you may get nicked once in a while. And this is one such nick, is what my heart tells me. But again, all more information will come from Indian Air Force in due course of time. Yes. And we will know more about it as to how it happened. It is just a informed mathematical guess that we are making. If 2 aeroplanes have gone down and they've crashed together at a very near location, we are just asking a question, could it be a mid-air collision? It may be, it may not be. We will come to know in due course of time. Yes, and we'll wait to hear from the authorities on that. We are not going to, in fact, speculate on that, because this involves the pilots. This involves their families. It's not just about about the information. It's got a lot to do with the sensitivities involved in this case. The information that we have with us is of Sukhoi 30 going down and also Mirage 2000, which have crashed near Morena. What we've also been told is that the Defence Minister is in touch with the Indian Air Force Chief. This is the information at this hour. The Indian Air Force Court of Inquiry, also, like Shiv was telling us a few moments ago, is going to establish whether there was a mid-air collision or not. This is going to be a court of inquiry that is going to give more details as to what really happened there, mid-air collision or not. Akshay has more details on that. A court of inquiry is set up to give more insights about what really happened, whether this was a mid-air collision, a technical snag. Initial information, Akshay, and we spoke to the SP also of Morena. He said that the villagers there have said that they actually saw the fighter jet on fire before it came down. Well, Sneha, as you rightly mentioned, that there should not be any speculations as far as this news is concerned, because it involves a lot of people. In fact, it involves sentiments of the entire country, and that exactly is one thing we have to respect. So we will only talk about the facts that we have right now. What we are getting to hear as far as this accident is concerned, is that there was an exercise taking place, a routine exercise, and the incident took place somewhere around 6 a.m. in the morning. And that is when the villagers actually saw the fighter pilots, according to them, coming down, and it was on fire. So there is a likelihood of a mid-air collision. But as Shiv has mentioned, and as the information I'm getting from my sources, it is that a court of inquiry has been ordered in this particular accident, that is going to establish all the facts, whether there was a technical snag, whether there was a pilot error, whether there was a mid-air collision, whether there was some calculation gone wrong, or whether there was some equipment that has caused into this particular crash. But both fighter aircraft coming down at the same time and in the same region points us towards a mid-air collision. It can also point us to a possibility that an aircraft developed some technical errors and crashed into the other one.
but all that will be established. The most important information that we have to give to our viewers is that two pilots have been rescued. They ejected in time. They have been rescued. They have sustained some injuries, but they have been rescued by the authorities. Choppers of the Indian Air Force have been trying to trace the third pilot, and they are reaching to the location of the third pilot as well. Because these are two aircrafts. The Sukhoi 30 MKI is a twin-seater aircraft. Which means that it has a space for two. There can be a pilot, and then there can be a co-pilot as well. There can be a gunner as well in that aircraft. Mirage 2000. There are two variants. One is a single seater. One is a twin seater. From the information that we are getting right now is that in this incident there was a single seater Mirage 2000 involved, but that has to be confirmed by the Indian Air Force, and that is the reason everything now, all the facts now depend on the fact-finding teams that have been set up, the court of inquiry that has been set up, and that is going to bring out all the facts about this particular horrible tragedy. But there needs to be ramped up efforts as far as finding out the third pilot. Right now, and that remains the priority not just for the local authorities but the Indian Air Force as well. So as soon as the third pilot is traced and is rescued, we can take a sigh of relief. But till then, the authorities are working right now to reach out to the third personnel of the Indian Air Force that was also caught in this particular incident. Because Sneha, we have to understand that after ejection of the seat, a pilot can sustain, and there is a very likelihood that the pilot will sustain some injuries. And this is a forested area, so it will take some time for the authorities to actually find everyone that has been involved in this accident. But it is our good luck that the villagers actually spotted the aircraft coming down, and they informed the authorities as soon as possible. That's why the effort to rescue these personnel of the Indian Air Force was launched very quickly, and that is also the reason that we have rescued already the two Air Force personnel who have been involved in this tragedy. Yes, Neha? we're getting in all the details. Sketchy at this point in time. However, we have some information about two accidents that have taken place. This is a crash. A Sukhoi 30 and Mirage 2000 aircraft in separate incidents have crashed near Morena. A court of inquiry has been set up, is what we know, then to examine further and give a clear indication as to what really happened. Whether this was a mid-air collision or not, because the aircrafts have crashed some distance from each other. The debris is still being retrieved, is what we know. And also, as far as Sukhoi 30 is concerned, we have a confirmation that there were two pilots and they have ejected safely. They've received injuries. Both the aircrafts had taken off from the Gwalior Air Base where an exercise was undergoing, is what we know. Two fighter planes have crashed. This is Sukhoi 30. It's a two-seater. And the second one, a Mirage 2000, which we get a sense of could be a two-seater, could be a one-seater is a possibility. In fact, both these possibilities are real. But as far as Sukhoi 30 is concerned, this indeed was a two-seater. Had two pilots and they have ejected safely, received injuries. The crash has taken place in Morena. In fact, we also spoke to the SP of the area and so also with the district collector of Morena. We get in more details on that. A court of inquiry is going to establish clearly, Akshay, what really happened, whether this was a mid-air collision. But there is some amount of speculation because both of these fighter jets have crashed some distance away from each other, and both of them were taking part in the exercise in Gwalior base. Akshay. Can you repeat that question? Yes, I said that in fact a court of inquiry is going to give a sense of what really happened there, whether this was a mid-air collision or not. But because it is both the crashes have taken place from some distance from each other, that's the reason why there is some amount of speculation that this indeed could have been a mid-air collision. Well, the fact that these fighter aircraft were involved in exercises and they have been found near each other, there is a likelihood, yes, Neha, that there could have been a mid-air collision, or there is a possibility that one aircraft developed some technical glitches and crashed into the other one, because precision is extremely important as far as
as far as these aircrafts are concerned, especially these fighter aircrafts are concerned, given the fact that they fly at a very high speed. They fly even beyond the sound barriers, and that is the reason that any kind of technical glitch can actually result into tragedy. The major concern here is also, Sneha, that these are not old aircraft. These are, some of the most important aircraft in the arsenal of the Indian Air Force. Sukhoi 30 MKI is a air superiority aircraft, which is an all-weather aircraft. It has been used extensively by the Indian Air Force in several air shows, in several operations. Sukhoi 30 MKI is also one of the most important aircraft as far as the backbone of the Indian Air Force is concerned. When we talk about Mirage 2000, it is also a very crucial aircraft. In fact, Mirage 2000s are the aircraft that were used in Balakot airstrike. So these are the aircraft that we rely on heavily. So any kind of news of a technical glitch or of these aircraft colliding in an exercise, if there was a mid-air collision due to some technical error, that has to be studied thoroughly to prevent any further incident in future. Yes, there have been crashes as far as Sukhoi 30 MKIs are concerned in the past as well, but these are some of the, not just in India, these are some of the most developed, some of the most state-of-the-art technology that we are using in terms of Sukhoi 30 MKI. There are also projects going on to convert them into super Sukhois by the Ministry of Defense. But that is why this incident is extremely crucial in terms of finding that what exactly went wrong. And while the other most important part of the story is about the well-being of the pilots who have been rescued, is the information what we are getting from our sources in Morena, as well as the DM has spoken on it as well, that pilots are injured because of ejection that was done by the pilots of the aircraft, but that we have to actually wait for the court of inquiry to in fact find out that what exactly went wrong and whether there was a technical error or whether there was an error a human error rather. So that is going to be very important to establish that what exactly went wrong. The second thing here is about the third pilot that we are getting to know from our sources, that teams are deployed to find the third person of the Indian Air Force as well in that forested area, because after you eject from the seat, there is a lot of jerk that you receive. There is a lot of force that your body has to go through as far as ejection are concerned in a fighter aircraft, and then you come down with a parachute. So in that forested area, the teams of Indian Air Force and the district administration will have to ramp up the efforts to find out the third personnel of the Indian Air Force, because there are chances that the third personnel can also have some injuries. So that is what we are waiting for the district administration to in fact confirm that what exactly is the status of the third Indian Air Force personnel right now. But the only good news that is coming right now in this tragic accident is about the rescue of the 2 Air Force pilots who could eject in time. Neha? Yes, also give us a sense, Akshay, of the recovery of the debris of the second aircraft, Mirage 2000, because what I understood from what we've been told officially is that that as far as the debris of Sukhoi 30 is concerned, they've recovered that, they retrieved that, and also, like we've said, ejected pilots have been taken to safety and they're now being treated for the injuries that they've received. Well, that is exactly what we are getting to hear right now, Sneha. That as far as the debris is concerned, the debris has been found of the Mirage 2000 as well. But we have to understand that when a technical glitch happens that requires an ejection, the pilot ejects in air and the plane continues to go to a further distance, and that is the reason the authorities have been able to, or rather have been trying to find the personnel who were there in the Mirage 2000 aircraft as well. So right now all the efforts are going on to find out everything about this particular accident, and we will have to actually wait for some more information to come and for an official statement to come from the Indian Air Force for the things to become clear, because even the Indian Air Force right now is trying to find out all the facts about this information, and it would be best for and that is the reason that the Indian Air Force is not rushing out with a statement, because they have to find out that what exactly happened, at least the basics of it, that what exactly went wrong that led to this crash. Yeah. All right, now confirmation on 2 pilots ejecting safely from the Sukhoi
30 flight, and whether this was a mid-air collision or not is something that a court of inquiry will establish. But what we picked up again is that Akshay, the defense minister, a statement indicates that they are in touch with the Indian Air Force chief as far as this crash involving Mirage 2000 and Sukhoi 30 is concerned. Well, yes, Neha, we are getting information that, in fact, Defense Minister Raksha Mantri Rajnath Singh has been briefed by the chief of the air staff, and that is the information that we are getting right now. More information, or rather more clarity on this incident can only come once we have a confirmation on what is the status of the third person of the Indian Air Force. The Indian Air Force chief has already given out all the details that are available to him to the defense minister, and he is in constant touch. In fact, the defense minister has also inquired about the well-being of the two pilots that have been rescued by the district administration, and in fact they are being provided the best available medical help that the district administration can provide. And depending on the injury, if the injuries are minor, then the airport personnel who are injured, they can get out of the hospital sooner. But if the injuries are of a serious nature, and that is what we are waiting to hear from the IAF statement, then we will have to wait for some more time. And anything that is required as far as in terms of help is concerned, that is going to be provided by the Indian Air Force as well as the Ministry of Defense. Air Force Court of Inquiry to establish whether there was a mid-air collision or not is what we are picking up. One pilot, the Mirage 2000 had one pilot when the crash took place. That's the information that we have with us. In fact, initial reports are suggesting that two pilots are safe, and an Indian Air Force chopper is reaching the location of the third pilot soon is what we've been given to understand. Akshay continues to be with us. This will take a while, a difficult sort of a terrain, and this is a village and a jungle area also, like the SP and the collective are both talking about. Well, Sneha, that makes it difficult actually for the rescue efforts to take place, especially the terrain. And it is only because of it is our good luck that the villagers actually spotted the aircraft coming down, because if this kind of an incident would have taken place in a rather denser forested area, or a deeper forested area, there would have been difficulties in rescue operations as well as in the evacuation of the pilots. It is only because there was a village nearby and the villagers actually saw a plane coming down, they could inform the district administration, and they could actually begin the rescue operations in the early morning, in the wee hours of the morning itself. So we are lucky in that sense, and that is the reason the two pilots who have injuries, they have been rescued in time, and that is now everything depends on the rescue operations as far as the status of the third pilot is concerned, because efforts have to be ramped up in a bid to actually rescue the third person of the Indian Air Force in time, as far as this crash is concerned. Yeah. Be with us, Akshay. I'm just going to come back to you in a moment from now. In fact, we spoke with the collector of Morena district, Ankit Asthana, and here's what he had to say. प्रारंभिक इंफॉर्मेशन जो प्राप्त हुई है, मुरैना जिले के पहाड़गढ़ ब्लॉक के मानपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में दो एयरफोर्स के जेट जो है वो क्रैश हुए हैं। एक सुखोई और एक मिराज की अभी प्रारंभिक जानकारी है। दो पायलट्स अभी 10 मिनट पहले ही ट्रेस हो गए हैं जो उस प्लेन से इजेक्ट हुए थे। मौके पे प्रशासनिक टीम, पुलिस, राजस्व अमला, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस हम लोगों ने रश करा दी है, क्योंकि थोड़ा रिमोट एरिया है, तो एसडीएम और एसडीओपी भी रास्ते में है, और मैं और एसपी साहब भी मौके पर ही पहुंचे। अंकित जी, क्या ये जो दोनों विमान हैं, सुखोई और मिराज 2000, ये आपस में टकराए हैं या फिर अलग अलग एक्सीडेंट का शिकार हुए? इतनी स्पष्ट जानकारी मिली नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स की टीम भी ग्वालियर से ऑन द वे है, तो ये कंफर्मेशन एयरफोर्स की तरफ से प्राप्त हो चुकी है। यानी कि दोनों ही जेट्स में, फाइटर जेट्स में दो पायलट सवार थे? अभी ये कंफर्मेशन नहीं है। किसी को रिकवर किया गया है, किसी को बचाया गया है? अभी दो पायलट्स 10 मिनट पहले हम लोग ट्रेस कर पाए हैं, थोड़ा इंजरी है उनको, लेकिन वो लोग अभी सेफ हैं। लेकिन सुरक्षित हैं? जी।
इसमें बस इतना है कि जो दो विमान है, एक सुखोई है और एक मिराज है, जिनका क्रैश हुआ है। पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र में जो हमारी टीम मौके पे पहुंच गई है उसमें क्लियर है, उसमें दो पायलट भी मिल गए हैं। और एक सूचना और आ रही है जो एयरफोर्स हमें पता चला है कि पगारा डैम है उसके पास भी कोई घटना हुई है, तो वहां पे भी हमारी टीम जो है पहुंची हुई है, पहुंच रही है। आप कोई दूसरी घटना के बारे में बात कर रहे हैं आशुतोष? अभी दूसरी घटना का भी पता चल रहा है, कि वो पगारा डैम के पास में जो है वहां पे भी घटना हुई है। और ये जो पहली घटना है, ये क्रैश कैसे हुआ? प्राइमा फेसी क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? इसमें प्राइमा फेसी जो वहाँ पे ग्रामीणों ने कुछ देर पे देखा, वो ये देखा कि एक विमान जो है गांव के ऊपर से गुजरा है, जिसमें आग लगी हुई थी। और इसके बाद फिर मानपुर पंचायत है, वहाँ पे ये प्लेन मिला है जंगल में। दो पायलट मिल गए हैं जो घायल अवस्था में है। In fact, Shiv Arur, my colleague, is with us for more details. Shiv, sketchy information right now. Give us a sense of the information that you have. What is it that you picked up just yet? A very troubling development involving a mid-air collision of two Indian Air Force fighters. The recovery operations have taken place. Two pilots, we understand, are safe right now, but there is news that it may not be, completely good news as far as the condition of the other crew is concerned, but we're still awaiting an official word from the Indian Air Force at this point of time. This was a mid-air collision during a routine Air Force exercise that was taking place between Mirage 2000 fighters, Su-30 fighters and certain other types including helicopters as part of a routine Air Force exercise taking place between Rajasthan, Madhya Pradesh and certain other air bases as part of the Southwestern Air Command and the Central Air Command. But what we do know is that this was a routine exercise. All manner of maneuvers were being performed by pilots as part of this war game, but nothing out of the ordinary. Fairly routine, something that happens every week. But what precisely must have happened is not yet known. It is true that pilots and their aircraft have to fly sometimes very, very close to each other as part of these war games. But the possibility of a mid-air collision is an inherent risk in aerial exercises of this kind. But Indian Air Force pilots are highly qualified, so something must have gone drastically wrong, for the two aircraft to actually collide in this manner. The images that we're getting from the ground are quite disturbing at this point of time, but recovery operations by the local administration is on at this point to make sure that the local populations are also safe. We have information that two pilots have been recovered and are safe. An official confirmation and detailed word and statement from the Indian Air Force, is going to happen. As we speak, there will be more information coming in from the Indian Air Force. But the Mirage 2000 is an 80s aircraft that in India had acquired in the 80s. They've performed amazingly through many operations. Remember, it was Mirage 2000s that won the Kargil war for us as far as air power was concerned. They also were used for the Balakot airstrikes. The Su-30 aircraft, Su-30 fighter, is a heavy air dominance fighter that the Indian government had started acquiring, in the late 90s, early 2000s. It's the fighter that India operates in the largest numbers. As a matter of fact, it's of Russian origin. The Mirage is a French aircraft. Both aircraft, in many ways, the backbone of India's fighter strength, but a collision of this kind is an extremely troubling occurrence. It doesn't happen very often. The possibility of it, like I said, is always there, but how this happened will only be known once a court of inquiry goes into the flight data recorders, the cockpit voice recorders of both the aircraft, or all of the information that will be available from the ground control, etc. And that's a long and laborious process. Right now, the focus will be on the safety of the pilots and to make sure that people are safe on the ground at this point of time. Very, very unfortunate that the Indian Air Force has possibly lost some people and definitely lost two aircraft. Shiv Arur, with that detailed report on the information that we have yet from the collector, from the SP of Morena, talking about this crash that took place at 5:30. These are two Indian Air Force fighter jets. One was Mirage 2000, the other one is Sukhoi 30 that crashed in Morena is what we know. Initial information that two pilots managed to eject safely and they've received injuries. Hunt is on, in fact, for the pilot who was flying Mirage 2000. One pilot involved in the second aircraft.
What we also know, and that's the information we're getting at this hour, the Chief of the Air Staff has briefed Defence Minister Rajnath Singh on the fighter plane crash in Morena. Pilots of the crashed fighter jets in Morena ejected safely. They've been found. Medical aid is being provided, is the confirmation that we have as far as Sukhoi 30 is concerned. We'll wait for more details on what really happened to the Mirage 2000 and the pilot. And this could be a mid-air collision also is what we're getting a sense of right now. Meanwhile, Defence Minister Rajnath Singh has taken stock of the situation. Ravish Pal has more details on that. Ravish, ऐसा बोला जा रहा है कि ये mid-air collision होने के chances है. कुछ information अगर आपके पास इस relation में है तो. बिल्कुल, ये जो जिस तरीके से क्रैश हुए हैं दोनों विमान सुखोई और मिराज, अभी तक की जो इनिशियल जानकारी आई है उसके मुताबिक ये मिड एयर कोलिजन ही है। लेकिन क्योंकि ये मामला वायुसेना से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है इस पर प्रशासन भी खुल करके कुछ बोल नहीं रहा है। प्रशासन भी बार बार यही कह रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है हमने उनसे भी बात की, जो एसपी है वहाँ के आशुतोष बागदी हमने उनसे बात की, दोनों का यही कहना है कि जब तक एयरफोर्स की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आएगा वो दोनों इस पर कुछ कह नहीं सकते। स्थानीय प्रशासन वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन पे जरूर लगा हुआ है लेकिन किसी भी तरीके का बयान वो नहीं दे रहा है। मिड एयर कोलिजन के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि ऐसा बेहद ही मुश्किल है कि दो विमान अलग अलग जो विमान है वो एक साथ क्रैश हो जाए। ये अगर देखा जाए तो वायुसेना के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है कि एक के बाद एक वायुसेना को एक ही जगह पर ये क्रैश हो, तो इसीलिए इसमें माना ये जा रहा है कि ये मिड एयर कोलिजन हो सकता है। लेकिन वायुसेना की तरफ से ही इस पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा। कैजुअलिटीज की बात करें तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका साफ तौर पे कहना है कि जो दो पायलट हैं वो इंजर्ड जरूर है लेकिन वो सेफ हैं। एक पायलट अभी जो है उसको वहां पे सर्च किया जा रहा है, उनको सर्च किया जा रहा है। हालांकि जो सोर्सेज है हमारे वो अभी कह रहे हैं कि शायद इसमें एक पायलट जो है वो शहीद हो गए हों, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से इस पर कोई बयान नहीं आया है। ये सिर्फ ऑफ द रिकॉर्ड बात की है उन्होंने, एक अनुमान जताया है, एक अंदेशा जताया है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि जो तीसरा पायलट है उसकी खोजबीन अभी वहां चल रही है और इसीलिए उस पर कोई आधिकारिक बयान जो है अब तक जारी नहीं हुआ है। लेकिन जो इनिशियल इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक कुल 3 पायलट थे, सुखोई में 2 थे, मिराज में 1 पायलट थे, ऐसा अभी अनुमान लगाया गया है। जी बिल्कुल, we'll wait for more details on the whereabouts of the third pilot Mirage 2000 and we'll only stick to the official information. However, right now this is what we have. The jets crashed at 5:30 a.m. this morning. Ravish Pal continues to be with us. Ravish, वहाँ के locals का क्या कहना है? ये पहाड़ी इलाका है ऐसा कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, ये पहाड़गढ़ करके एक इलाका है, मुरैना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, थोड़ा सा दूर दराज का क्षेत्र है जिला मुख्यालय से। और हाँ, ये पहाड़ी इलाका है, झाड़ियों वाला इलाका है और बेहद वीरान सा रहने वाला बंजर सा एक इलाका है जहाँ पे ये प्लेन क्रैश हुआ है। जिस तरीके से दोनों प्लेन क्रैश हुए माना जा रहा है कि कोशिश की गई है कि ये प्लेन जो है ये रिहाइश इलाकों में ना गिरे, गाँव के ऊपर ना गिरे, ऐसा शुरुआती संकेत दिख रहे हैं जिस तरह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। तो अब देखना अब ये है कि जो क्योंकि कोर्ट इंक्वायरी जो है एयरफोर्स की तरफ से इसे शुरू कर दी गई है, रक्षा मंत्री भी लगातार संपर्क में बने हुए हैं वायुसेना के अधिकारियों से, तो ऐसे में देखना ये है कि जो जांच होती है उसके बाद क्या फैक्ट निकल के सामने आते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये जिस जगह पे क्रैश हुआ है ये पहाड़ी का एक इलाका है और दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पे ये प्लेन क्रैश हुए हैं। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए स्थानीय प्रशासन की टीमें हैं, वायुसेना है या फिर सेना है, वो सब वहाँ पे पहुंच चुके हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। वायुसेना के बकायदा हेलीकॉप्टर जो है वो भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में वहाँ पर अब लग गए हैं क्योंकि बड़े इलाके में मलबा जो है वो फैला हुआ है, इसलिए खोजबीन अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, official confirmation on Mirage 2000 and the pilot is awaited. We'll get in more details because the formal statement is also expected. Ravish, authorities और Air Force की तरफ से भी सारे डिटेल्स अभी दिए जाएंगे। यहाँ के एसपी और कलेक्टर का कहना है कि ये इन्फॉर्मेशन केवल एयरफोर्स ही प्रोवाइड कर सकते है पायलट्स की सेफ्टी के बारे में, क्योंकि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास इस बात की रिपोर्ट नहीं है कि प्लेन कहाँ से थे और इनमें कौन सवार थे।
मतलब जिनके नाम हो या क्रेडेंशियल्स जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है, इसलिए वो सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन पे लगे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन ने वहाँ पे पूरी तरीके से पूरे इलाके को घेर करके, क्योंकि वायुसेना के पास से वहाँ पे वायुसेना के प्लेन क्रैश हुआ है, तो जाहिर सी बात है भीड़ लोगों की वहाँ पे जरूर उमड़ रही है। तो गांव वाले भी वहाँ पे बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इसलिए पहली कोशिश ये है एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि 2 पायलट जो है उन्हें तो सुरक्षित अस्पताल पहुंचा दिया गया है और इसलिए अब जो है वो बात तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन पे लगा हुआ है। किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन पायलट से जुड़ी हुई या फिर ये किस रूट से थे, क्या ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा था, टेस्ट ये फ्लाइट की, तमाम चीजें जो है वो उन्होंने एयरफोर्स के ऊपर छोड़ दिया है। जब तक एयरफोर्स इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देगा तब तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस पर आगे ज्यादा कुछ बात कर नहीं रहा है। जी बिल्कुल। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा भी है कि गांव वालों ने ये देखा कि फायर आ रही थी एक एयरक्राफ्ट से। रविश, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, गांव वाले यही कह रहे हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि एक जो प्लेन नीचे गिर रहा था उससे ऊपर ही आग लगी हुई थी, ये गांव वाले कह रहे हैं। उन्होंने बोला, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी उन्होंने जो बयान दिए हैं स्थानीय पुलिस को वो यही दिए हैं, क्योंकि जो पहाड़गढ़ पुलिस चौकी है वहाँ पे, पहाड़गढ़ पुलिस थाना है, वहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो बताया है अब तक, उसे यही बताया है कि एक प्लेन जो जब नीचे की ओर आ रहा था, बहुत तेजी से वो आ रहा था, तो उसमें आग पहले से ही लगी हुई थी। ये भी लोकल जो लोग हैं वहाँ के गाँव वाले हैं वो कह रहे हैं। हालांकि पुलिस जो है अब ये बयान जरूर दर्ज कर रही है, लेकिन ये पूरी इंक्वायरी जो है जाहिर सी बात है आगे चल के वायुसेना के हाथ में ही जानी है, इसलिए अभी इस पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बोल रही है, क्योंकि उनका ऐसा लगता है कि अगर वो यहाँ पर कोई आगे बयान लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो क्योंकि एयरफोर्स की इंक्वायरी जब शुरू होगी वो पुलिस से थोड़ी अलग होती है और वो एयरफोर्स के अपने रिकॉर्ड के लिए होती है, इसलिए इस पर और ज्यादा बात कर नहीं रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर हुआ है, गाँव वालों ने ये जरूर बताया है कि एक बड़ा आग का गोला जो है वो उन्होंने देखा था नीचे जमीन की ओर आते हुए। Okay, getting in all the details right now. We're putting out those pictures also of the pilots then being taken to safety. These are pictures coming in from Morena, where this crash has taken place. All the details. At 5:30, this crash took place involving a Sukhoi 30 and a Mirage 2000 is what we know. The collector has told India Today that the pilots involving Sukhoi 30 are safe. They've received injuries, and these are visuals, in fact, they're putting out for our viewers of the pilots being taken to a hospital, in fact, for the injuries to be treated. This is medical attention being given to the pilots involved in the crash involving a Sukhoi 300. We're awaiting more details as far as the crash involving Mirage 2000 is concerned. There is speculation, and a court of inquiry is going to establish that clearly about whether this was a mid-air collision or not. The crash took place at 5:30, and we're getting in these pictures from Morena in Madhya Pradesh, bordering Rajasthan, where this crash took place. In fact, these are pictures coming in of the pilot being taken for medical treatment. We have a confirmation about the 2 pilots in the Sukhoi 30 aircraft being saved. We also heard from the collector and the SP who reiterated that they are safe. They managed to eject safely, and they have received injuries. They're now being taken for medical treatment. These are latest pictures coming in first on India Today. We're talking about the involvement of 2 fighter jets in this crash in Morena in Madhya Pradesh, also bordering Rajasthan. Mirage 2000 and Sukhoi 30 crashed in Madhya Pradesh's Morena. This, in fact, is a difficult terrain, is what we've been given to understand. We'll continue to keep a very close eye on those big developments from Madhya Pradesh. For the moment, it's time for a quick commercial break. You are watching India Today. How you make money and how you beat the market.
three very experienced practitioners of all that with me. I don't need to introduce them. Ramdev, Shankar and Nikhil, all of them you know very well. Nikhil's the youngest, but he's been remarkably successful with Zerodha over the last few years. So my hats off to him for what he and his brother have achieved over the last few years. I'll tell you one simple golden formula to beat the market as an active fund manager, okay? And that is if you get the bear market right. Because your biggest alpha will come when the market falls 40 and you're falling only 20 or 10. In a bull market, you will not be able to beat the index. Impossible. And therefore, if you have the skills to get a bear market right, and you fall half the market, you fall 25% of the market, you have put 20% point in the bag, and then you will gradually fritter it away over a 3-4 year period to still end up ahead in the game. And which is why it's an underappreciated skill to get the bear market right. Okay? And bull market, ultimately bull market, most people will have similar stocks. It's very hard to be away from, the consensus trade. So therefore, the skill where you can add value as an active manager is to get the bear market right. And occasionally, if you get that right, and I think every 3-4 years you will get a down year, just make sure you get that part right. When is the next bear market according to you, Shankar? I don't think it's happening anytime soon, which is a problem for active managers. Okay, it happened, 2 years back, in COVID. Now, if you were alert enough, you could have seen that. I mean, it was not difficult to spot that there was some degree of fall coming, not a bear market, maybe not a huge bear market, but I think from February 2020, there was enough data and the screen was telling you from Japan up until Italy, schools are closing down and everything. I mean, that was not like a SARS virus. It was very clear this was a catastrophe, a calamity, and they would have some impact. So if you positioned yourself through some hedges or if you could short in your structure, I think you would have made significant alpha right there. In a month, you could have been up 20% relative to the market if you were smart enough to do that. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. India's cricket fixation is often much debated. But facts remain, other sports don't give the income security that cricket does. Ask Paramjeet Singh, a hockey player now reeling under the burden of poverty. Paramjeet, who has played at the national level 9 times and was also selected for the Indian hockey team twice, is now a daily wage labourer.
He earns his bread and butter by working in a warehouse, picking up sacks of wheat and paddy. कमाई 300-350-400 रुपया हो जाती कमाई। गुजारा तो नाम का गुजारा ही है, ये बस खाना खा रहे हैं एक टाइम बस ओनली। Whenever Paramjeet gets time these days, he reaches the hockey field to coach his son. मैंने देखा आपका बच्चा भी खेल रहा है आपके साथ, तो क्या बनाना चाहते हैं? हाँ जी, जो सपना मैंने देखा था मैं वही सपना अपने बच्चे में देखना चाहता हूँ। Paramjeet hopes the government will help him find a job. सरकारों से क्या मांगे? सरकारी जॉब। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। Paramjeet now has only one dream, that his son makes it to the national team and achieves what he could not. Bureau Report, India Today. You are watching India Today. Welcome back. We're getting you the very latest as far as the crash involving Sukhoi 30 and Mirage 2000 is concerned. A while ago, we spoke to Group Captain Augustine over the two fighter jets crashing in Morena in Madhya Pradesh. Listen in. Okay, we'll be getting in more details on that in a few moments from now. But we're talking about a Sukhoi 30 and Mirage 2000 aircraft that have been involved in a crash near Morena in Madhya Pradesh. We're picking up information on the Defence Minister, having a conversation with the Indian Air Force Chief on what could have gone wrong here. Two Indian Air Force fighter jets have crashed in Madhya Pradesh's Morena. Ravish Pal has more details on that. Ravish is in fact now joining us live. Ravish, इस समय information, latest information अगर बता सकते हैं हमें मिराज 2000 पायलट के बारे में और रेस्क्यू वर्क किस प्रकार से प्रोग्रेस कर रहा है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरी तरीके से वहाँ पे एक सेना ने अपने हाथ में ले लिया है। बाकायदा भी कुछ देर पहले ही तस्वीरें आई हैं जब सेना ने बाकायदा जो एयरलिफ्ट किया वहाँ पे जो इंजर्ड पायलट्स थे उसे एयरलिफ्ट किया है वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें अब अस्पताल भेज दिया गया है। सेना की तरफ से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि दोनों पायलट वो सुरक्षित हैं और बताया जा रहा है कि ये दोनों सुखोई के पायलट हैं। हालांकि मिराज में भी पायलट थे, उनका अभी पता नहीं चल पाया है। उन पर कोई भी स्टेटमेंट अब तक ना तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया गया है, ना ही एयरफोर्स की तरफ से वहां पर अब तक कोई स्टेटमेंट आया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि सुखोई में 2 पायलट थे, मिराज में 1 थे, इसलिए अभी तीसरे पायलट जो हैं उनकी वहां पे खोजबीन जारी है। जो इलाका है वो बेहद पथरीला बंजर इलाका है, चट्टानों से भरा हुआ इलाका है, पहाड़ी इलाका है, दुर्गम क्षेत्र है, वहां पे पहुंचना आसान नहीं था और इसीलिए दोनों पायलट जो हैं उन्हें एयरलिफ्ट करके वहां से अस्पताल भेजा गया है। जहां पे ये क्रैश हुआ, आपको बता दें कि जो लोकेशन है ये बेहद हार्ड स्टोन वाली पूरी जगह है और इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब प्लेन दोनों नीचे क्रैश हुए तो इंजरीज जो है वो बेहद ज़्यादा गंभीर रही हैं। अभी इस पे और ज़्यादा स्टेटमेंट जो है वो आया नहीं ऑफिशियली, ना एयरफोर्स की तरफ से आया है ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो गाँव वाले थे उन्होंने प्लेन को गिरते हुए देखा था, इसकी सूचना दी गई थी। हालांकि ये जो क्रैश साइट है ये आपको बता दें कि ग्वालियर एयरबेस से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ग्वालियर एयरबेस से ही ये क्योंकि उड़ान भरी गई थी अभी तक जैसा बताया गया है, तो वहां से कुछ ही मिनटों में जो एयरफोर्स की टीम है वो तो पहुंच गई थी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचने में भी ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से वहां से जो डीएम है वहां के और जो एसपी हैं उन्हें पहुंचने में थोड़ा समय लगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ये क्रैश साइट जो है वो दूर है। लेकिन क्योंकि सेना की वायुसेना की टीम जो है वो बाय एयर यहाँ पे पहुंची थी तो वो पहले पहुंच गई थी। फिलहाल इस पूरी जगह को घेर लिया गया है, जो मलबा है उसकी खोजबीन की जा रही है और साथ ही में माना यह जा रहा है कि जो तीसरे पायलट हैं उनकी खोजबीन इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाएगी क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा जो बुरी खबर जो नहीं सुनना चाहता है कोई वो कहीं ऐसा ना हो कि वो सामने आ जाए। इसलिए अभी बहुत तेजी से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके, सर्च ऑपरेशन चला करके जो थर्ड पायलट है उन्हें ढूंढने की कोशिश जारी है। यहाँ पे 5:30 बजे की ये घटना है, आसपास के लोगों ने क्या देखा, रवीश पाल इसके बारे में अगर बताएं।
देखिए, जो जहां पे ये क्रैश हुआ है उससे कुछ दूरी पे जो गांव है, गांव के लोगों ने एक आग का गोला देखा। ये अब तक वो बता रहे कि एक प्लेन बहुत तेजी से जो है वो जमीन की तरफ आया था और उनका ये कहना है कि उसमें आग लगी हुई थी। जो गांव है वो पहाड़गढ़ इलाका है, पहाड़गढ़ इलाके के पास का ये गांव है। पुलिस स्टेशन जो है वो भी पहाड़गढ़ पुलिस स्टेशन वहां लगता है। तो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है, जो गांव वालों का स्टेटमेंट है, जो पुलिस ने लिया है, जो अब आगे चल के एयरफोर्स भी लेगी, क्योंकि उसको भी इंक्वायरी करनी है। एयरफोर्स का अपना रिकॉर्ड भी होता है, वो उसी के तहत पूरी इंक्वायरी करती है, इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो जाहिर सी बात है, अभी जो बात निकल के सामने आई वो यही है, मिड एयर कोलिजन की संभावना ज्यादा लग रही है, क्योंकि एक साथ दो प्लेन का एक ही जगह पर क्रैश होना, इसके चांसेस बेहद कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं एयरप्लेन हिस्ट्री में। तो ऐसा लग रहा है देख करके कि शायद ये मिड एयर कोलिजन हो, लेकिन क्योंकि मामला वायुसेना से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो इस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान दे रहा है रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन पर, और इसीलिए मुरैना से जो टीम्स है वो पहुंच गई हैं, लोकल स्टेशन पहुंचा हुआ है, बाकायदा वहां पे जो प्लेन में आग लगी हुई थी उसे बुझा दिया गया है। जो मलबा है वो कुछ दूरी तक फैला हुआ है। देखना यह है कि ये जो मलबा है उसमें से अब क्या कुछ मिलता है, क्योंकि कोशिश यही है कि मलबे के अंदर कोई और ना फंसा हुआ हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर शायद उसके बचने की संभावना बेहद कम रहेगी। हमारे साथ रविश, just coming back to you in a few moments from now. We earlier spoke with the SP of Morena as well, listening to what he had to say. इसमें बस इतना है कि जो दो विमान है, एक सुखोई है और एक मिराज है, जिनका क्रैश हुआ है पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र में जो हमारी टीम मौके पे पहुंच गई है उसमें क्लियर है, इसमें दो पायलट भी मिल गए हैं। और एक सूचना और आ रही है, जो एयरफोर्स हमें पता चला है कि पगारा डैम है उसके पास भी कोई घटना हुई है, तो वहां पे भी हमारी टीम जो है पहुंची हुई है, पहुंच रही है। आप कोई दूसरी घटना के बारे में बात कर रहे हैं आशुतोष? दूसरी घटना का भी पता चल रहा है, कि वो पगारा डैम के पास में जो है वहां पे भी घटना हुई है। और ये जो पहली घटना है, ये क्रैश कैसे हुआ? प्राइमा फेसी क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? इसमें प्राइमा फेसी जो वहाँ पे ग्रामीणों ने कुछ देर पे देखा, वो ये देखा कि एक विमान जो है गांव के ऊपर से गुजरा है, जिसमें आग लगी हुई थी। और इसके बाद फिर मानपुर पंचायत है, वहाँ पे ये प्लेन मिला है जंगल में दो पायलट मिल गए हैं जो घायल अवस्था में है। Only a court of inquiry is going to establish successfully what really happened as far as this accident involving two fighter jets concerned. Ravish continues to be with us. Ravish, इस समय speculation है कि possibility of a mid-air collision. ये ग्वालियर में एक एक्सरसाइज कैरी आउट हो रहा था रविश, और 5:30 बजे के करीब ये एक्सीडेंट हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि आपको बता दें कि दरअसल ये जो पूरा इलाका है, आपको बताएं तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली से बाद अगर देखा जाए तो लखनऊ, आगरा, ग्वालियर एक बड़ा बेस है एयरफोर्स का, और यहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे जो वायुसेना की एक्सरसाइज है वो होती रहती है। और माना जा रहा है कि ये भी जो फ्लाइट्स थी ये उसी एक्सरसाइज का एक हिस्सा थी, जो करीब 5:30 बजे इन्होंने उड़ान भरी थी, और उसके बाद ही ये क्रैश हुआ है। मिड एयर कोलिजन की संभावना जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी जता रहा है, क्योंकि वहां पे जो गांव वालों ने देखा है वो भी यही देखा है कि जब एक प्लेन नीचे की ओर आ रहा था तो उसमें पहले से आग लगी हुई थी। तो ये बात भी निकल करके सामने आई है, जिसको अब आगे, क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी इस पे होनी है, तो जाहिर सी बात है और ज्यादा फैक्ट जो है इस पे निकल के सामने आएंगे और डिटेल्स जो है इस पे निकल के सामने आएंगी। लेकिन अभी तक इतना जरूर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी जो लगातार बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि 2 पायलट जो सुरक्षित है उन्हें तो एयरलिफ्ट कर दिया गया है, 3rd पायलट जो है उनकी तलाश अभी जारी है। और अलग अलग तरीके की बातें निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन आधिकारिक बयान की अभी तक जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इंतजार कर रहा है कि एक बार एयरफोर्स की तरफ से स्टेटमेंट आ जाए, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन एयरफोर्स के पास ही होगी कि कौन ये पायलट्स थे और कब इन्होंने उड़ान भरी थी, कहां से उड़ान भरी थी, किस फ्लाइट में थे, आखिर इस फ्लाइट का मकसद क्या था, एक्सरसाइज किस चीज के लिए हो रही थी। ये तमाम चीजें जो है एयरफोर्स जो है जब स्टेटमेंट जारी करेगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अब तमाम अपनी ताकत वहां झोंक चुका है,
कोशिश ये है कि जिस बड़े इलाके में ये पूरा मलबा फैला हुआ है और क्योंकि बेहद दुर्गम ये इलाका है तो वहां से सबसे पहली कोशिश यही होगी कि इस मलबे को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि ये आगे चल के इंक्वायरी में जो एयरफोर्स की इंक्वायरी होगी उसमें बेहद इंपॉर्टेंट और क्रूशल रोल प्ले करेगा। तो इसलिए अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस रैकेट जो है इस प्लेन के इसे भी बचा रहा है और साथ ही में वो जो मलबा है उसकी तलाश उसकी इसलिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि उसके अंदर कोई फंसा हुआ ना मिले, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जैसे हमने पहले भी बात की थी बचने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। अभी सब जो है इसी बात की कोशिश कर रही है कि जो थर्ड पायलट है, क्योंकि इतना जरूर कंफर्म हो गया है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि टोटल इस पूरे इंसिडेंट में 3 पायलट हैं, तो 2 पायलट अगर मिल गए हैं तो तीसरे कहां हैं, बस यही अब पूरी खोजबीन चल रही है जहां ये क्रैश हुआ है वहां पर। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। इनफैक्ट वी आल्सो स्पोक विद द कलेक्टर ऑफ मोरेना, लिसनिंग टू व्हाट ही हैड टू से। अभी प्रारंभिक इंफॉर्मेशन जो प्राप्त हुई है, मुरैना जिले के पहाड़गढ़ ब्लॉक के मानपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में 2 एयरफोर्स के जेट जो है वो क्रैश हुए हैं। एक सुखोई और एक मिराज की अभी प्रारंभिक जानकारी है। 2 पायलट्स अभी 10 मिनट पहले ही ट्रेस हो गए हैं जो उस प्लेन से इजेक्ट हुए थे। मौके पे प्रशासनिक टीम, पुलिस, राजस्व अमला, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस हम लोगों ने रश करा दी है, क्योंकि थोड़ा रिमोट एरिया है तो एसडीएम और एसडीओपी भी रास्ते में है और मैं और एसपी साहब भी मौके पर ही पहुंचे। अंकित जी, क्या ये जो दोनों विमान हैं सुखोई और मिराज 2000 ये आपस में टकराए हैं या फिर अलग अलग एक्सीडेंट का शिकार हुए? इतनी स्पष्ट जानकारी मिली नहीं है क्योंकि एयरफोर्स की टीम भी ग्वालियर से ऑन द वे है, तो ये कंफर्मेशन एयरफोर्स की तरफ से प्राप्त हो चुकी है। यानी कि दोनों ही जेट्स में, फाइटर जेट्स में 2-2 पायलट सवार थे? अभी ये कंफर्मेशन नहीं है। किसी को रिकवर किया गया है, किसी को बचाया गया है? अभी 2 पायलट्स 10 मिनट पहले हम लोग ट्रेस कर पाए हैं, थोड़ा इंजरी है उनको लेकिन वो लोग अभी सेफ हैं, लेकिन सुरक्षित हैं। जी। रवीश पाल कंटिन्यूज टू बी विद अस। रवीश, जो पहला एयरक्राफ्ट है जो इनफैक्ट जिसके पायलट्स सेफली इजेक्ट हो गए थे और उन्हें ले गया गया है, उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में अगर बता सकते हैं, क्योंकि इनिशियल इन्फॉर्मेशन ये था कि वो घायल है और लेकिन स्टेबल है, ये कहा गया था अथॉरिटीज़ की तरफ से। बिल्कुल, अभी दोनों सुरक्षित हैं। ग्वालियर उन्हें ले जाया गया है और एयरलिफ्ट करके ले जाया गया है। बहुत कम मिनट में ही वो वहाँ जो क्रैश साइट है वहाँ से वो ग्वालियर पहुँच गए थे। और क्योंकि आपको बता दें कि जब भी इस पूरे एरिया में ग्वालियर, मुरैना, भिंड, यहाँ पे अगर कोई क्रैश होता है तो ग्वालियर में फैसिलिटीज़ है एयरफोर्स की तरफ से, वहाँ पर वो सीधे उन्हें ले जाया जाता है, वहीं पर ले जाया गया है। आर्मी हॉस्पिटल है और वहाँ पर उनका इलाज जारी है। राहत की बात है कि ये जो दोनों पायलट्स हैं जो इजेक्ट कर गए थे प्लेन के क्रैश होने से पहले, ज़मीन पर टकराने से पहले, इनको चोटें ज़रूर आई थी, लेकिन जो सूत्र है लोकल वहाँ पे जो हमारे सोर्सेज हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उनका कहना है कि उनकी इंजरीज थी ज़रूर, लेकिन वहाँ पर ये इंजरीज जो है आमतौर पर जब कोई पायलट इजेक्ट करता है प्लेन से तो ये इंजरीज उन्हें आती ही है। लेकिन राहत की बात है कि दोनों पायलट जो हैं वो सेफ हैं, वो सुरक्षित हैं और वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हालांकि अभी उनके स्टेटमेंट्स नहीं लिए गए हैं क्योंकि डॉक्टर्स ने साफ मना किया है कि अभी जब तक वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो जाएंगे स्टेटमेंट जाहिर सी बातें नहीं होंगे। लेकिन एयरफोर्स की टीम जो है जो इन्वेस्टिगेशन पूरा करेगी वो अभी लोकेशन पे नहीं पहुंची है। जो ऑफिशियल्स वहां पहुंचे थे वो बाय फ्लाइट वहां पे बाय एयर पहुंचे थे और पहली कोशिश ये थी कि जो इंजर्ड है उन्हें वहां से एयरलिफ्ट किया जाए, तो एयरलिफ्ट करके तो ग्वालियर आ गए हैं। थर्ड जो पायलट है उनकी फिलहाल यहाँ तफ्तीश जारी है, खोजबीन जारी है, कहाँ मिलेंगे। लेकिन ये एक बड़ी खबर है, राहत की खबर है कि ये जो 2 पायलट हैं जो इजेक्ट कर गए थे प्लेन के जमीन में टकराने से पहले, ये अब जो है वो रिकवर हो रहे हैं, सुरक्षित हैं और इनको चोटें जरूर गंभीर लगी है, जिससे पूरी तरीके से बाहर आने में अभी उन्हें समय लगेगा। बने रहिए हमारे साथ। Ravish is getting us all of those details, and just to break down the sequence of events, we're talking about a possible mid-collision, In fact, this is a crash involving 2 fighter jets. One is Sukhoi 30, the second one is Mirage 2000. They were part of a routine military exercise at the airbase. The collector has said that the pilots ejected safely and they received some injuries. Defense Ministry sources have told India Today that pilots are safe and Indian Air Force chopper was reaching the location of the third pilot soon. Ravish is with us. Ravish, इस Indian Air Force chopper के बारे में अगर बता सकते हैं लोकेशन जहां पर मिराज 2000 क्रैश कर गई है, इसके बारे में।
ये आपको बताएं कि देखिए मुरैना, जैसे कि नाम कई बार आपने भी सुना होगा, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, ये क्या चंबल से लगा हुआ इलाका है। बेहद दुर्गम ये इलाका माना जाता है और जहां पे ये क्रैश हुआ ये बहुत रिमोट इलाका है। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है मुरैना का, उससे बेहद दूर ये इलाका पड़ता है और एक छोटी सी पहाड़ी है, मानपुर पहाड़गढ़ इलाका है ये, वहां पर ये क्रैश हुआ है। तो उसकी जो मानपुर पंचायत है, पहाड़गढ़ थाने के अंतर्गत आती है, वहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। थोड़ा सा दुर्गम इलाका है और बेहद हार्ड रॉक वाला ये पूरा इलाका है। तो इसीलिए जब ये पायलट्स इजेक्ट होकर के भी नीचे गिरे थे तो जाहिर सी बात है उन्हें चोटें आई थी इसी वजह से, क्योंकि नीचे चट्टाने हैं, मिट्टी नहीं है जहां पर ये क्रैश हुआ है। और इसीलिए आपको बताया कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसलिए थोड़ा ज्यादा लंबा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर जो सतही जमीन होती है, मिट्टी होती है, तो अगर कोई प्लेन क्रैश होता है तो आमतौर पर वो उसमें धंस जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं है। पत्थरों से टकराने के बाद प्लेन का जो मलबा है वो काफी दूर तक फैल गया है, इसलिए इस बड़े इलाके में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। जो दोनों पायलट हैं आपको बताए जहां पे प्लेन क्रैश हुआ है उससे कुछ दूरी पे ही ये इंजर्ड मिले थे। जब इजेक्ट होकर के नीचे उतरे हैं बाय पैराशूट तो ये वहां पे इंजर्ड थे, क्रैश साइट से थोड़ी ही दूरी पे ये मिल गए थे, इसलिए इन्हें तुरंत एयरलिफ्ट करके वहां से ले जाया गया। जो थर्ड पायलट हैं जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, माना जा रहा है कि वो क्योंकि मिराज में थे और वो इजेक्ट नहीं कर पाए या कर पाए हैं, इसकी कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, क्योंकि तकरीबन सुबह से ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्रैश के बाद से ही, तो इसमें 2 पायलट तो इजीली मिल गए थे जो क्रैश साइट से कुछ ही दूर पे पैराशूट से इजेक्ट करके बाहर आ गए थे। लेकिन जो थर्ड पायलट है, क्योंकि उनकी अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन अभी आना बाकी है। आधिकारिक रूप से ना एयरफोर्स इस पर अब तक कुछ बोली है, ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कुछ बोल रहा है। सिर्फ जो 2 पायलट बच गए हैं उनके बारे में जानकारी सब दे रहे हैं। हालांकि ये जो इलाका है थोड़ा सा रिमोट है, इसलिए अब थोड़ा टाइम जरूर लगा है यहाँ तक पहुंचने में, लेकिन अब पूरी तरीके से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है वो यहाँ पे मौजूद है, एम्बुलेंस है यहाँ पे, बाकायदा फायर ब्रिगेड पहुंची हुई है और जो प्लेन में आग लगी हुई थी, जो फाइटर प्लेन में जो मलबे में आग लगी हुई थी, उसको पूरी तरीके से बुझा दिया गया है, उसे कूल डाउन कर दिया गया है और अब जो है उन जो मलबा है उसे खंगाला जा रहा है, उसे हटाया जा रहा है, ताकि मलबे के अंदर से जो है वो देखा जा सके कि अंदर और कोई बचा तो नहीं है और अगर कोई है तो उसकी हालत कैसी है। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ रवीश। In fact, my colleague Shivarur sent us this report earlier. Let's take a look. A very troubling development involving a mid-air collision of 2 Indian Air Force fighters. The recovery operations have taken place. 2 pilots, we understand, are safe right now, but there is news that it may not be, completely good news as far as the condition of the other crew is concerned, but we're still awaiting an official word from the Indian Air Force at this point of time. This was a mid-air collision during a routine Air Force exercise that was taking place between Mirage 2000 fighters, Su-30 fighters and certain other types including helicopters as part of a routine Air Force exercise taking place between Rajasthan, Madhya Pradesh and certain other air bases as part of the Southwestern Air Command and the Central Air Command. But what we do know is that this was a routine exercise. All manner of maneuvers were being performed by pilots as part of this war game, but nothing out of the ordinary. Fairly routine, something that happens every week. But what precisely must have happened is not yet known. It is true that pilots and their aircraft have to fly sometimes very, very close to each other as part of these war games. But the possibility of a mid-air collision is an inherent risk in aerial exercises of this kind. But Indian Air Force pilots are highly qualified, so something must have gone drastically wrong, for the 2 aircraft to actually collide in this manner. The images that we're getting from the ground are quite disturbing at this point of time, but recovery operations by the local administration is on at this point to make sure that the local populations are also safe. We have information that 2 pilots have been recovered and are safe. An official confirmation and detailed word and statement from the Indian Air Force, is going to happen. As we speak, there will be more information coming in from the Indian Air Force. But the Mirage 2000 is an 80s aircraft that in India had acquired in the 80s. They've performed amazingly through many operations. Remember, it was Mirage 2000s that won the Kargil war for us as far as air power was concerned. They also were used for the Balakot airstrikes. The Su-30 aircraft, Su-30 fighter, is a heavy air dominance fighter that the Indian government had started acquiring, in the late 90s, early 2000s. It's the fighter that India operates in the largest numbers. As a matter of fact, it's of Russian origin. The Mirage is a French aircraft.
Both aircraft, in many ways the backbone of India's fighter strength, but a collision of this kind is an extremely troubling occurrence. It doesn't happen very often. The possibility of it, like I said, is always there, but how this happened will only be known once a court of inquiry goes into the flight data recorders, the cockpit voice recorders of both the aircraft, all of the information that will be available from the ground control, etc. And that's a long and laborious process. Right now, the focus will be on the safety of the pilots and to make sure that people are safe on the ground at this point of time. Very, very unfortunate that the Indian Air Force has possibly lost some people and definitely lost 2 aircraft. And India Today spoke earlier to Group Captain Augustine Vinod over the 2 fighter jets crash in Morena. Listen in. Now, I wanted to, tell you all, especially the viewers, I'm reminded of a book I read long ago. It used to be like a Bible for combat pilots. It said, when you fight with sword, you'll get nicked once in a while. So when you're training in conditions very close to war, then it is possible that you may once in a while get nicked, and this nick is one such nick is what I would put it, because in military aviation is inherently fraught with dangers. I have lost many course mates. I flew MiG-21 for a long time. A lot of my course mates flew MiG-21 for a long time. Many juniors and my seniors I have lost. All right, with that, it's time for a quick commercial break here. We'll continue to get you updates on that collision that has taken place, possibly a mid-air collision, but a court of inquiry is going to prove what really happened there. But this is an accident involving 2 fighter jets. You are watching India Today. पार्टी पठान के घर पे रखोगे, तुम्हें मरनाबाजी के लिए पठान तो आया। और पटाखे भी लाएगा। Shah Rukh Khan is back and with a record-breaking bang. अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। Pathaan has become the first Hindi film to collect over 100 crores worldwide in a single day. The superstar smash hit scripted history on release day itself, a non-holiday when it grossed 55 crores net. Pathaan frenzy has India swooning for Bollywood, which has been struggling post-pandemic to get the crowds to the theatres. Shah Rukh Khan's Pathaan has done what no other Hindi film could do in the recent past. These scenes of audience going crazy in theatres have flooded social media. For now, it seems Pathaan is on its way to become a blockbuster. एकदम सुपर, मतलब एकदम जैसे सोचा था, जो एक्सपेक्टेशन थी पूरा टच कर दिया उसने। अगर वो मूवी देखना तो लुक देखो, जो उन्होंने जैसे लंबे बाल रखे या जो भी है, इधर अलग ही लुक में आया। ऐसा लग रहा था करण अर्जुन वाला फिर से फीलिंग आ रहा है। सुपर मूवी, इट वाज अ ग्रेट मूवी। शाहरुख खान इज बैक गाइस, शाहरुख खान इज बैक। बहुत अमेजिंग। मैं अगर आपको बता दूंगा थोड़े स्पॉयलर्स आ जाएंगे, बट ही वाज बैंग ऑन। इतना अच्छा था कि, और सलमान खान तो लाइक चेरी ऑन द टॉप था। बहुत अच्छा। The Shah Rukh Khan Deepika Padukone starrer has already hit several firsts. Apart from being the widest Hindi release of all time in India,
Pathaan is the highest grossing film for a non-holiday release. After Hrithik Roshan's War and Amir Khan's Thugs of Hindustan, Pathaan is the third Yash Raj film to collect over 50 crores on opening day. It is also the highest grossing first day ever for Shah Rukh Khan, Deepika Padukone and John Abraham. The record-breaking opening of Pathaan proves just one thing, that Shah Rukh Khan continues to rule as the Badshah of Bollywood. Bureau Report, India Today. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. It's a new fad in India. Chai shops listing the owner's educational qualifications. Meet engineer chaiwala from Uttarakhand's Haldwani. Pankaj Pandey, a 28-year-old diploma holder in mechanical engineering, is a hit in the town. मैंने मैकेनिकल से पॉलिटेक्निक किया हुआ है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गरूर से, तो उसके साथ साथ मैं अपनी जेई के लिए तैयारी भी करते रहता हूँ, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स के लिए। और जो मेरा मेन जो विजन है वो इसी को आगे लेके जाना है, इंजीनियर चाय वाले को। Pandey used to work at a call center in Noida earlier. While he is proud to run a tea shop, he is also attempting to clear entrance exams for further education. अपकमिंग जो भी जेई के एग्जाम्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के मैकेनिकल के लिए, उनकी तैयारी कर रहा हूँ। और लेकिन मैकेनिकल की तो वैसे वैकेंसी निकलना बहुत कम हो चुका है, कई सारे डिपार्टमेंट तो बहुत बिल्कुल ख़त्म ही कर दी है वैकेंसी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है। Pandey's chai is popular among locals and tourists alike. कुछ ना कुछ तो करना ही है, अच्छा कर रखा है उनने, यहाँ पे चाय की दुकान खोल दी है और बहुत बढ़िया चाय अच्छी लग रही है, टेस्ट बहुत अच्छा है। बेरोजगारी बहुत है सर आजकल, इसलिए भैया ने अपना खोल लगा छोटा मोटा काम, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर इनका। रेगुलर लगाते हैं सर, सुबह 4 से 9 बजे तक लगाते हैं। Pankaj Pandey opens his tea stall every evening for 2 hours. Bureau Report, India Today. You are watching India Today. Hello there, you're watching India Today TV. I'm Sneha. The headlines first. 2 fighter jets crashed at Madhya Pradesh's Morena. 2 pilots ejected from Sukhoi 30. Mirage 2000 had 1 pilot before the crash. Actor Kangana slams Bollywood after Pathaan's massive success. Alleges false narrative on Hindu hate being spread. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath's big statement called Sanatan Dharma as India's national dharma. Congress is hit out as asking, what about the other religions? हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। Bharat Jodo Yatra nears the finish line. Mehbooba Mufti joins the last leg of the Congress Yatra. Kharge seeks adequate security from Home Minister Amit Shah.
Going across straight to Prime Minister Narendra Modi, who is speaking in Bhilwara right now. Let's take a listen. एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जिसका प्रकाश सबको दिशा दिखाता है, सबका कल्याण करता है। भगवान देवनारायण भी ऐसे ही ऊर्जा पुंज थे, अवतार थे, जिन्होंने अत्याचारियों से हमारे जीवन और हमारी संस्कृति की रक्षा की। देह रूप में मात्र 31 वर्ष की आयु बिताकर जनमानस में अमर हो जाना सर्वसिद्ध अवतार के लिए ही संभव है। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का साहस किया, समाज को एकजुट किया, समरसता के भाव को फैलाया। भगवान देवनारायण ने समाज के विभिन्न वर्गों को साथ जोड़कर आदर्श व्यवस्था कायम करने की दिशा में काम किया। यही कारण है कि भगवान देवनारायण के प्रति समाज के हर वर्ग में श्रद्धा है, आस्था है। इसलिए भगवान देवनारायण आज भी लोक जीवन में परिवार के मुखिया की तरह हैं। उनके साथ परिवार का सुख दुख बांटा जाता है। भाई और बहनों, भगवान देवनारायण ने हमेशा सेवा और जन कल्याण को सर्वोच्चता दी। यही सीख, यही प्रेरणा लेकर हर श्रद्धालु यहां से जाता है। जिस परिवार से वे आते थे, वहां उनके लिए कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुख सुविधा के बजाय उन्होंने सेवा और जन कल्याण का कठिन मार्ग चुना। अपनी ऊर्जा का उपयोग भी उन्होंने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए किया। भाई और बहनों, भला जी भला, देव भला। भला जी भला, देव भला। इसी उद्घोष में भले की कामना है, कल्याण की कामना है। भगवान देवनारायण ने जो रास्ता दिखाया है, वो सबके साथ से सबके विकास का है। आज देश इसी रास्ते पर चल रहा है। बीते 8-9 वर्षों से देश समाज के हर उस वर्ग को सशक्त करने का प्रयास कर रहा है जो उपेक्षित रहा है, वंचित रहा है। वंचितों को वरीयता, इस मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। आप याद करिए, राशन मिलेगा या नहीं, कितना मिलेगा, ये गरीब की कितनी बड़ी चिंता होती थी। आज हर लाभार्थी को पूरा राशन मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है। अस्पताल में इलाज की चिंता को भी हमने आयुष्मान भारत योजना से दूर कर दिया है। गरीब के मन में घर को लेकर टॉयलेट, बिजली,
गैस कनेक्शन को लेकर चिंता हुआ करती थी, वो भी हम दूर कर रहे हैं। बैंक से लेन देन भी कभी बहुत ही कम लोगों के नसीब होती थी। आज देश में सभी के लिए बैंक के दरवाजे खुल गए हैं। साथियों, पानी का क्या महत्व होता है, ये राजस्थान से भला बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन आजादी के अनेक दशकों बाद भी देश के सिर्फ 3 करोड़ परिवारों तक ही नल से जल की सुविधा थी। 16 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। बीते 3.5 वर्षों के भीतर देश में जो प्रयास हुए हैं, उसकी वजह से अब 11 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पाइप से पानी पहुंच चुक लगा है। देश में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए भी बहुत व्यापक काम देश में हो रहा है। सिंचाई की पारंपरिक योजनाओं का विस्तार हो या फिर नई तकनीक के सिंचाई, किसान को आज हर संभव मदद दी जा रही है। छोटा किसान जो कभी सरकारी मदद के लिए तरसता था, उसे भी पहली बार पीएम किसान सम्मान निधि से सीधी मदद मिल रही है। यहां राजस्थान में भी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 15,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे उनके बैंक खातों में भेजे गए हैं। साथियों, भगवान देवनारायण ने गौ सेवा को समाज सेवा का, समाज के सशक्तिकरण का माध्यम बनाया था। बीते कुछ वर्षों से देश में भी गौ सेवा का ये भाव निरंतर सशक्त हो रहा है। हमारे यहां पशुओं में खुर और मुंह की बीमारियां, खुरपका और मुंहपका कितनी बड़ी समस्या थी, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इससे हमारी गायों को, हमारे पशुधन को मुक्ति मिले, इसलिए देश में करोड़ों पशुओं के मुफ्त टीकाकरण का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। देश में पहली बार गौ कल्याण के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन से वैज्ञानिक तरीकों से पशुपालन को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जा रहा है। पशुधन हमारी परंपरा, हमारी आस्था का ही नहीं, बल्कि हमारे ग्रामीण अर्थतंत्र का भी मजबूत हिस्सा है। इसलिए पहली बार पशुपालकों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। आज पूरे देश में गोवर्धन योजना भी चल रही है। ये गोबर सहित खेती से निकलने वाले कचरे को कंचन में बदलने का अभियान है। हमारे जो डेयरी प्लांट है, वे गोबर से पैदा होने वाली बिजली से ही चले, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, पिछले वर्ष
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैंने लाल किले से पंच प्राणों पर चलने का आग्रह किया था। उद्देश्य यही है कि हम सभी अपनी विरासत पर गर्व करें, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकले और देश के लिए अपने कर्तव्यों को याद रखें। अपने मनुष्यों के दिखाए रास्तों पर चलना और हमारे बलिदानियों, हमारे शूरवीरों के शौर्य को याद रखना भी इसी संकल्प का हिस्सा है। राजस्थान तो धरोहरों की धरती है। यहां सृजन है, उत्साह और उत्सव भी है, परिश्रम और परोपकार भी है, शौर्य यहां घर घर के संस्कार है। रग राग राजस्थान के पर्याय है। उतना ही महत्व यहां के जन जन के संघर्ष और संयम का भी है। ये प्रेरणा स्थली भारत के अनेक गौरवशाली पलों की, व्यक्तित्व की साक्षी रही है। तेजासी से बाबूजी तक, गोगा जी से रामदेव जी तक, बप्पा रावल से महाराणा प्रताप तक, यहां के महापुरुषों, जननायकों, लोक देवताओं और समाज सुधारकों ने हमेशा देश को रास्ता दिखाया है। इतिहास का शायद ही कोई कालखंड है जिसमें इस मिट्टी ने राष्ट्र के लिए प्रेरणा न दी हो। इसमें भी गुर्जर समाज शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति का पर्याय रहा है। राष्ट्र रक्षा हो या फिर संस्कृति की रक्षा, गुर्जर समाज ने हर कालखंड में प्रहरी की भूमिका निभाई है। क्रांतिवीर भूप सिंह गुर्जर, जिन्हें विजय सिंह पथिक के नाम से जाना जाता है, उनके नेतृत्व में बिजोलिया का किसान आंदोलन आजादी की लड़ाई में एक बड़ी प्रेरणा था। कोतवाल धन सिंह जी और जोगराज सिंह जी ऐसे अनेक योद्धा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दे दिया। यही नहीं, राम प्यारी गुर्जर, पन्ना धाय जैसी नारी शक्ति की ऐसी महान प्रेरणाएं भी हमें हर पल प्रेरित करती है। ये दिखाता है कि गुर्जर समाज की बहनों ने, गुर्जर समाज की बेटियों ने कितना बड़ा योगदान देश और संस्कृति की सेवा में दिया है। और ये परंपरा आज भी निरंतर समृद्ध हो रही है। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अनगिनत सेनानियों को हमारे इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, जो उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन आज का भारत, नया भारत, बीते दशकों में हुई उन भूलों को भी सुधार रहा है। अब भारत की संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए
भारत के विकास में जिसका भी योगदान रहा है उसे सामने लाया जा रहा है। साथियों, आज ये भी बहुत जरूरी है कि हमारे गुर्जर समाज की जो नई पीढ़ी है, जो युवा है, वो भगवान देव नारायण के संदेशों को, उनकी शिक्षाओं को और मजबूती से आगे बढ़ाएं। ये गुर्जर समाज को भी सशक्त करेगा और देश को भी आगे बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। साथियों, 21वीं सदी का ये कालखंड भारत के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए बहुत अहम है। हमें एकजुट होकर देश के विकास के लिए काम करना है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर बहुत उम्मीदों से देख रही है। भारत ने जिस तरह पूरी दुनिया को अपना सामर्थ्य दिखाया है, अपना दमखम दिखाया है, उसने शूरवीरों की इस धरती का भी गौरव बढ़ाया है। आज भारत दुनिया के हर बड़े मंच पर अपनी बात डंके की चोट पर कहता है। आज भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। इसलिए ऐसी हर बात जो हम देशवासियों की एकता के खिलाफ है, उससे हमें दूर रहना है। हमें अपने संकल्पों को सिद्ध कर दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरना है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान देव नारायण जी के आशीर्वाद से हम सब जरूर सफल होंगे। हम कड़ा परिश्रम करेंगे, सब मिलकर के करेंगे। सबके प्रयास से सिद्धि प्राप्त होके रहेगी। और ये भी देखिए कैसा संयोग है, भगवान देवनारायण जी का 1111वां अवतरण वर्ष। उसी समय भारत की G20 की अध्यक्षता, और उसमें भी भगवान देवनारायण का अवतरण कमल पर हुआ था। और G20 का जो लोगो है उसमें भी कमल के ऊपर पूरी पृथ्वी को बिठाया है। ये भी बड़ा संयोग है। और हम तो वो लोग हैं जो पैदाइशी कमल के साथ हुई है। और इसलिए हमारा आपका नाता कुछ गहरा है। लेकिन मैं पूज्य संतों को प्रणाम करता हूं। इतनी बड़ी तादाद में यहां आशीर्वाद देने आए हैं। मैं समाज का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक भक्त के रूप में मुझे आज यहां बुलाया, भक्ति भाव से बुलाया। ये सरकारी कार्यक्रम नहीं है। पूरी तरह समाज की शक्ति, समाज की भक्ति, उसी ने मुझे प्रेरित किया और मैं आपके बीच पहुंच गया। मेरी आप सबको
अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। जय देव दरबार, जय देव दरबार, जय देव दरबार। With that, it's time for a quick commercial break here. News continues in just a bit. So what is February known for? What? Valentine. और वैलेंटाइन A cold month. वैलेंटाइन डे 28 days, 29 days. हम थोड़ा दूसरे काम में बिजी हैं. कपल्स वीकेंड पसंद के लिए फेमस है फॉर द चिल्ड्रंस डे For Valentine Day. मेन तो वही है Who presents the union budget? क्या नाम है उनका मैडम का I don't know. I really don't know this. क्या expectations है 2023 budget से? एक्चुअली मैंने अभी तक बजट पढ़ा ही नहीं है क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ। बेरोजगार के लिए नौकरी. टैक्स पे थोड़ा कमी हो. ये क्या होता है यूनियन बजट? कुछ नहीं करना चाहिए, जैसे हाल पे वैसे छोड़ देना चाहिए. You are watching India Today. Seen Siddharth Anand's previous work, if you have watched Bang Bang, if you've watched War, you know that he is well known. He's famous for these well choreographed action sequences. And a lot of them are actually inspired by Hollywood films like Fast and the Furious, Mission Impossible, Mr. and Mrs. Smith. So it came to me as no surprise that 90% of the film is basically action. There is one sequence after another. And few sequences for me actually stood out as a sore thumb. I did feel like special effects, the VFX department could have worked harder on these sequences, especially at a time when we are watching so much Hollywood, right? We are watching international films, we're watching James Bond, we're watching so much international stuff. I felt that few action scenes, especially one scene where John and Shah Rukh are dangling from two helicopters or from one helicopter, that I felt was a little weak. Yes, I mean, otherwise the film it basically rides on action. It's an action extravaganza. It took Shah Rukh Khan almost 32 years to get a bona fide action film. Tushar, I seriously feel that Pathaan doesn't need any ratings. I mean, look at the fans going crazy for him and SRK, Pathaan and everybody in the film. I mean, this film doesn't need any ratings, right? Controversy, no controversy, orange bikini, no orange bikini. I think if you want to have a good time, if you want to see Shah Rukh Khan back in action, you might not like the film, you might not like his performance, you might not like what he says or does, but there is no denying the star power of Shah Rukh. The minute he's back on the big screen, and he's never been presented like this. This is the first time he's been presented. The script has been written around him like a true-blooded action hero. He's blazing his guns out. He's obviously worked hard on his body. The voice, the baritone that he uses from the opening frame to the last, he's been so consistent. Kashmir, once known as the paradise on earth, for more than 3 decades in the news for terror and killings, Deepa Soni, an artist from Udhampur, uses her brush to remind us of all good things about Kashmir. She wants the youth of the valley to be aware of the centuries-old heritage of Kashmir. She shares a vision of a positive, peaceful and fearless Kashmir through her canvas. I keep on trying different mediums. Like आप देखेंगे कि 3-dimensional काम मैं बहुत करती हूँ, कई बार मैं abstracts बहुत करती हूँ, कई बार मैं folk styles भी कर रही हूँ. मिनिएचर के साथ में मेरा बहुत ही मुझे बहुत पसंद है मिनिएचर पेंटिंग्स करना, जो कि बसोली पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है. Through her exquisite paintings, Soni recently depicted the autumn and what it means for the valley.
जो यंग जनरेशन है वो नए आर्ट फॉर्म्स के साथ काफ़ी इंस्पायर रहती है, और जो पुरानी जनरेशन है वो भी अपने पुराने हेरिटेज जो आर्ट फॉर्म्स करती आ रही है, अब वो आगे जनरेशन्स को नहीं सिखा रही है। तो कहीं ना कहीं जब यंग जनरेशन को इसमें इंटरेस्ट होगा तो ये फोक स्टाइल्स को हम आगे लेके जाएंगे। Sony's main objective is to promote folk arts through exhibitions to keep the youth engaged. With Mauzu Mohammed, Bureau Report, India Today. You are watching India Today. We're getting in some news right now, and this has got to do with the fighter aircraft that has crashed today. We're getting in details from Defence Ministry. Sources have said that the exact location of the crash is being ascertained. Preliminary reports suggest that one aircraft fell in the Morena part of Madhya Pradesh and the other one went down in the general area around Bharatpur, which is just some distance away from where the debris of Sukhoi 30 was found. Essentially, there's been one crash today involving two fighter jets. The debris of one has been found. The remains of one has been found in Morena, which is just in Madhya Pradesh, and close to Morena, some distance away, is Madhya Pradesh, is Rajasthan, in fact, where the debris of the second one, the remains of the Mirage 2000, have been found. The fate of the pilot of the aircraft, of the jet, in fact, fighter jet, Mirage 2000, is not immediately known. Essentially, the information is that there was one crash involving two fighter jets. This was Sukhoi 30 and Mirage 2000. Wreckage has been found in Morena and Bharatpur. Of the same crash, there were initial reports that suggested of another crash in Bharatpur, and that isn't the case. One crash remains, a wreckage of the fighter jets have been found in Morena and in Bharatpur, which is just in the border area essentially with Madhya Pradesh. It happens to fall in Rajasthan. They're barely just few minutes of flying distance away. Two fighter aircraft of the Indian Air Force were involved in an accident, remember, near Gwalior this morning. The aircraft was on a routine operational flying training mission. One of the three pilots, now there were two pilots on board Sukhoi 30. They ejected safely and they've sustained some injuries. An inquiry has been ordered to determine the cause of the accident, is what the Indian Air Force has said. One of the three pilots involved has sustained fatal injuries. That's the big story that we are breaking right now, and we're going by what has been said as far as the Indian Air Force is concerned, is that one person involved in that crash, one pilot involved in that crash of the three has sustained fatal injuries. Akshay Dongre is with us. Akshay, the two pilots on board Sukhoi 30 managed to, eject safely, and they were taken to safety, and of course they've been given medical attention right now. So from what the statement reads of the Indian Air Force, the pilot who was in fact on board Mirage 2000 has succumbed, is what we have a confirmation on. Well, Sneha, unfortunately, yes, that is the statement of the Indian Air Force, telling us that one of the pilots involved, one of the three pilots involved in the fatal crash, has not survived. In fact, he had sustained some fatal injuries, and the other two pilots who were found earlier, they were evacuated, and they are being provided medical help. They also have sustained some injuries, but
as far as the IAF statement is concerned, they have not sustained fatal injuries, and they are getting medical attention as far as the treatment is concerned. As you were telling our viewers about the geography of this area, Bharatpur is at the border. Is a border area of Rajasthan that borders with Uttar Pradesh as well as Madhya Pradesh, and that exactly is the reason there was a lot of confusion earlier that were there two separate incidents involving the IAF aircraft. But now it has become clear with the IAF statement that there was one incident, accident that took place involving two fighter jets, one a Sukhoi 30 MKI fighter aircraft and the other was Mirage 2000. While the two pilots of Sukhoi 30 MKI had ejected and they have been evacuated and dressed. They are being given treatment. The Mirage 2000 actually. Akshay, I'll just come back to you in a moment from now as we track all of those details. For the moment, it's time for a quick commercial break here. You are watching India Today. A B.Tech graduate in Madhya Pradesh is scripting a success story in dairy farming. Anil Patidar from Modi village, located 45 kilometers away from Agar Malwa district headquarters, chose to stay close to his roots and started his dairy in 2018. मैंने सन 2014 में बीटेक किया है आरजीपी यूनिवर्सिटी भोपाल से और आज मेरे पास मैंने सोचा पहले कि जॉब में तो खुद का बिजनेस रहेगा नहीं, दूसरों के अंडर में काम करना पड़ेगा। मैंने डेयरी फार्म स्टार्ट किया। 8 गायों से मैंने शुरुआत की और आज मेरे पास 100 से 105 गायें हैं। From cutting fodder to milking cows, Patidar relies on machines to manage his business. The venture that started with 4 cows now has more than 100. The business, he claims, is making big profit. मेरे पास 600 से 700 लीटर दूध पर डे का रहता है। कितना होता है आमदनी क्या? अब इसमें सर 60-40 का रेशियो रहता है। मान लो जैसे कि 600 लीटर दूध है, 40 रुपये लीटर के हिसाब से जोड़ा अपन ने तो 24,000 का दूध हुआ। तो इसमें 60% मेरी इनकम है और 40% मेरा। हाँ। Patidar claims one of the reasons to start his own dairy was to supply unadulterated milk. He claims many in the region are following his footsteps. Bureau Report, India Today. Well, it's February and clearly we at Tech Today are in the mood for an adventure. That's why we have the new Mahindra Thar on the show. Now, the old one as an NFT featured on the show and you loved it. But this one is now a social media sensation yet again. Why so? Why do all your favorite creators drive this car? Well, that's just one thing we're doing on the show. Apart from that, we want to find out what Amazon is doing in the skies. You have to stay tuned for this exclusive. And what is Samsung doing this month that we are going to unpack on Tech Today? All that and a lot more. I'm your host, Ayush Alavadi, and this is going to be an action-packed episode. Well, February is a big month for tech. Apple enthusiasts will wait for the end of the year. But a big rival to Apple is Samsung, and they do things differently. They do one event for their foldables, which is closer towards the Apple event when the big iPhone is launched. And then on February 1st is Galaxy Unpacked. A lot of you all have been writing in asking us which flagship phone should I buy in February. Of course, there's Mobile World Congress coming as well, and there's a bunch of other launches. But Samsung Galaxy Unpacked is as big as it gets. What can we expect?
Look, I'm not entirely sure, but I think Nabila is. So what I'm going to do is get to our special segment while Nabila brings you up to speed. Samsung is all set to have its big Galaxy Unpacked event of 2023 on February 1st. And as always, right here on Tech Today, we bring to you all the exclusives. And let me tell you, the rumor mills have been a buzz for the last 3 weeks. So let's have a quick look on what to expect. Samsung is expected to launch its flagship Galaxy S23 series at this event, and following tradition, the company will launch 3 phones, including its ultimate flagship, the Galaxy S23 Ultra. The lineup will also include the Galaxy S23 and Galaxy S23 Plus. The S23 Ultra may have 4 color variants: Cotton Flower, Phantom Black, Botanic Green, and Misty Lilac. The rear panel will continue to feature a unibody design with cutouts for 4 cameras. Filings data suggests an S Pen is also coming with the S23 Ultra variant. Apart from this, the S23 series is also expected to have a rear camera system that may be headlined by a 200 megapixel sensor. The phone may also come with an E6 AMOLED display, which we showed you last week on the iQ11 5G. Samsung is also likely to come up with its storage technology, the UFS 4.0, which allows you to open up several apps on your phone quite seamlessly and also load images into your gallery swiftly. The 3 phones will also be powered by the all-new Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 2 chipset, which, judging by our review of the iQ11, means lightning fast